Good morning, everyone. Good There, morning. there is one topic that is ONOE, that is called One Nation, One Election. In last week, everyone, every news channel, every business channel, or every Indian is speaking, talking about One Nation, One Election. So I'm 100% sure before starting my session, I'm 100% sure that all of them have something in their mind. You are aware that what is the one nation, one election. In spite of that, today I have taken topic. Reason is that there are lots of frequent asked questions. There are lots of doubts in your mind as well as in our mind. Reason is that it is not a perfect bill. It is not a act passed by Parliament of India. It is just passed by Cabinet Minister. So we are not aware. Even none of them, even you and me, we have not read the report of that committee. And that committee has given the report of the 18,236 page report. But that is not possible to read and study. And they have given the one summary report. That's what again in that summary report is around 250 pages. So it is not easy to read all pages. So what we have the understanding about one nation and one election, whatever we have seen any debate, whether we have discussed with any other person, it means everyone who is discussing on the one nation, one election has not studied anything, and it is not officially discussed in parliament. So everyone is the confused. So that is the reason ki I have taken the topic of the ONOE, and let me try whatever I have understand about this particular concept. So whatever I have the understanding, and if I have any doubt, any question, so let me discuss. And I'm not an official uh, spokesperson of the government of India that I will say anything that will be the 100% true and that will become the law. No, I am here only for the discussion. Might be possible. I have the some understanding. You have the some understanding. So we will try to understand this whole concept. So So today we are going to discuss ki what is the one nation, one election, and another why it is the need. इसकी need क्या है? पहले what is this? ये है क्या? And what is the need? And once we have understand both thing, then we will try to understand कि what is the challenges. कि मतलब है क्या? अगर कोई अच्छा चीज है, उसका understanding. First of all, we have to understand कि what is the one nation, one election. Then what is the need? इसकी need क्या है? Then what is the challenges? So just I take the one example in front of you. Suppose that our kids or our sibling becomes 25 26 ईयर, तो वहां पर एक फैमिली में क्वेश्चन आता है कि चल भाई एक इसकी शादी कर दे। तो सबसे पहला आता व्हाट इज द मैरिज। सो मैरिज इज द वन थिंग दैट इज द रिलेटेड टू सोशल एंड दैट इज रिलेटेड टू एवरीवन नीड। तो मैरिज एक हो गया कि क्या है, why it is the needed. Now he has joined the some job, or he is into the government job, government services, or he has started a startup, any business, and that he's getting the he's doing the marvelous job. Okay, it means he settled in term of the earning. So it is the need, because earning के बाद second thing आता है family completion का। Then what is the challenges obvious सी बात है। Suppose that I'm the guy, तो सबसे बड़ा challenge है कि I have to search a girl और गर्ल फैमिली, और अगर कोई गर्ल है तो उसके लिए सबसे बड़ी चैलेंज है कि एक अच्छा लड़का और उसके लिए अच्छी फैमिली। उसके बाद सेकेंड आता है कि हाउ वी विल मैनेज द मैरिजेस, शॉपिंग कैसे होगा, कहाँ पर बैंकेट हॉल होगा। तो दैट इज द सेपरेट थिंग। तो दिस इज द होल concept of the one nation one election. What is the one nation and one election, why it is the need, and what will be the challenge. So today we are going to discuss about three things. So before starting my session, I would like to know about
one nation and one election. You are the 3 to 4 participate right now. So I want to know ki what is the concept and what you have the understand. And if you have any doubt, like any question, ki Manish, what will happen, whether it will be the applicable from 2029, whether it will be applicable after 10 years, whether it will be applicable never. Second thing, what will happen if you have any doubt, any question, anything, so you can share your thought. So we will continue. So anyone, please unmute. And if you have any thought, any question, you can ask. Hello, Manish. It seems like a new concept to all of us. Yeah. Like we do have certain notion, like what does it mean? Like if it's a one nation, there should be one election. But Okay. like we are a big nation with so many, states and so many other layers of election happen, which in some way are important as well. So Mm. maybe you can guide us better Definitely. what it So is all let about. us start. Let us start. What this is. So first of all, I would like to put some frequent asked question, that is the ask in every debate or when you are discussing with any other person. So this kind of the frequent asked question you will find out when you will discuss with any friend, any relative, or anyone. So might be possible this kind of the question will come when you have started your discussion. First question is that कि there are lots of the political parties saying it is not possible. ये possible ही नहीं है. पहला question reason is that every person is saying कि India is large country and it is the lots of the variation in India. So uh, 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 completing one election in the one time, that is not possible in India. पहला there is the one question. Second thing, no need. कुछ लोगों का कहना है कि व्हाट इज द नीड यार, व्हाई यू आर गोइंग टू डू, जो चीज जैसा है चलने दो. थर्ड क्वेश्चन इज दैट कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना है. तो ऑब्वियस सी बात है कि सपोज दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नाउ रूलिंग पार्टी इज थिंकिंग कि आई हैव टू टेक दिस पर्टिकुलर बिल, तो इसके अनुसार देयर आर द लॉट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, तो को करना है तो करना पड़ेगा. एंड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, if they need certain number of MP, MLA, or some support from a state. Like in Lok Sabha, they need at least 360, 330, 363 numbers. Now BJP or their alliance is only 293. So वो that is their problem. ये हमारा problem नहीं है. First of all, we have to understand कि whether it is important or not. If it is the important, if it is a good for country, it is a good for public. So वो फिर that is the matter of the all political party, that is the matter of the government of India कि वो कैसे पास करती. But it is the question कि whether constitution will be amended or not. Last question, some person is saying कि it is the death of democracy. Reason is that, as you know, in any state, if there is some Vidhan Sabha election or any assembly election, so that is the term of the 5 years. There are a lot of the election is going in the 27, 28, in again 25. So what will happen? Suppose that in UP it is going the election in the 27 और वो 5 साल के अनुसार 29 में हो, 32 में next election is to happen. Now this committee is saying कि we will implement this thing in 2029, जब इंडिया का जो अभी मोदी जी का सरकार है, ये कल को जब भी नेक्स्ट इलेक्शन होगा, जनरल जनरल इलेक्शन होगा इंडिया का 2029 में या उससे पहले हो जाता है, तो इट इज एज्यूम ये सरकार 5 साल चलेगी, तो लेट्स एज्यूम कि 2029 में पहला इलेक्शन होना है. बट any election has happened in 2027, जैसे कि 2027 में यूपी इलेक्शन होना है, वहां पर जो भी पार्टी जीते, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पार्टी, आई एम टॉकिंग कि 2027 में एनी पार्टी इज कमिंग इन द रूलिंग
और वो 27 से 32 होना है, तो उसको 29 में इफ यू डिमोलिश, बिकॉज आपको वन नेशन वन इलेक्शन कराना है, तो इट इज द डेथ ऑफ द डेमोक्रेसी. रीजन इज दैट कि पब्लिक हैज गिवन द मैंडेट फॉर द 5 years, बट नाउ यू आर डिमोलिशिंग ओनली द 2.5 year. और यू से कि भाई 27 में मैं सिर्फ 2.5 साल के लिए इलेक्शन कराऊंगा, तो अगेन इट इज द डेथ ऑफ द डेमोक्रेसी. रीजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज द रिटर्न कि every election will be happened only in once in the 5 year. तो आप इसको 2.5 साल में करा रहे हो, तो इट इज द डेथ ऑफ द डेमोक्रेसी. तो दैट यू हैव टू, this is the frequent asked question by the every analyst, or you can say क्या you can say political party or any other person. And one more, again there is the one more question, death of the democracy ki, let's assume everything is happened in 2029 और वहां पर इंडिया इलेक्शन एंड ऑल विधानसभा इलेक्शन इज कंडक्टेड सेम टाइम. Okay, might be possible some of the state has not got majority. What will happen? फिर आप इलेक्शन कराओगे, और suppose that any government got the majority, but after 1 year, 2 years, 2.5 year before completion of the 5 years टर्म, अगर वो बीच में सरकार गिर जाती है, हो सकता है कुछ लोग रिजाइन कर दे, कुछ लोगों का एक पार्टी से दूसरे पार्टी में चला, एनीथिंग, सब लेट्स अज्यूम कि एनी रूलिंग पार्टी जो कि मेजोरिटी में था वो माइनॉरिटी में आ जाता है, देन देयर इज ओनली टू पॉसिबिलिटी. वन पॉसिबिलिटी देखिए, अदर पार्टी विल कैन फॉर्म द गवर्नमेंट, और सपोज दैट ऐसा कुछ होता है कि इवन रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी दे आर नॉट इन द पोजीशन कि वो कहीं पर करे, लाइक एक लेट्स अज्यूम कि एक कहीं पर 100 सीट है और एक रूलिंग पार्टी को मिला था 60, लेट्स अज्यूम, तो इट इज द मेजोरिटी, उसने इलेक्शन, मतलब कि दे आर वर्किंग, रूलिंग पार्टी थी, और दूसरी जो पार्टी थी वो 40 थी. 60 में से किसी ने टूट के 15 या 20 अलग हो जाते हैं, या 20 अलग हो जाते हैं, तो एक तरफ से 60 माइनस 20 कर देते तो 40, ऑपोजिशन भी 40 था और 20. अब ये तीनों पार्टी दे डोंट, they are not emerging, they are not matching their ideology. तो वो आपस में आइडियोलॉजी, तो तीनों कहते नहीं जी हमें कुछ करना ही नहीं है, तो देन व्हाट विल हैपन कि 29 में हुआ था, 31 में ऐसा कुछ हो जाता है, एंड ऑल पार्टी इज एग्री कि मैं नहीं फॉर्म करूंगा. इट मीन कि अगेन मिड टर्म होगा तो इट विल बी फॉर द 5 year, और इट इज द फॉर द बैलेंस ईयर. तो इफ इट इज द फॉर द 5 year, तो फिर वन नेशन वन इलेक्शन नहीं काम करेगा. If it is only for the 3 to 4 year, then it is the death of the democracy, because democracy में कहता है कि every election is for made for the 5 year, not for the 2 years, 3 years, etc. All those things. So this is the one important thing. Now there is some question, cost high होगा. Some person or some political party is saying कि when you are doing इलेक्शन एट द सेम टाइम, देन आपको बहुत सारे ईवीएम मशीन XYZ लाना पड़ेगा. यू हैव टू मैन्युफैक्चर लॉट्स ऑफ द ईवीएम मशीन, तो जहां पर आपकी कॉस्टिंग विल गो हाई. Then we have to understand, or everyone has to understand, ki what is the pro and cons of the political party, what is the pro and cons for the public, and last most important, what is the pro and cons for India or Bharat. मतलब कि what is the pro and cons for the India level, country level. So this is the frequent question asked, that is the general public is the discussing कि ये होगा तो क्या होगा, वो होगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा. Then let me try to understand what is the committee, what is the one nation and one election, and whatever I have asked the question to you, I have put it the some frequent asked question to you. So we will try to give answer. Let me try whatever I have the understanding. First, one nation, one election is the concept where Lok Sabha election and all Vidhan Sabha election will be conducted at the same time. This time can be 2029, this time can be any other time. I'm not talking about the time when it will be implemented. No, I'm talking about कि ये concept क्या है. तो जितने भी लोकसभा तो एक है, and all विधानसभा like 28 state and 8 Union territory. So all election will be conducted same time. That is called the one nation, one election. Now there will be the some question will arise in your mind.
Manish, there is another election that is called the MCD, Panchayati Raj, or etc. All those in Ward Commissioner. So here we are talking about the Lok Sabha and Vidhan Sabha, and that is the separate issue. कि MCD क्या होगा तो committee has given the one recommendation कि now we will discuss about the Lok Sabha and Vidhan Sabha at the one nation one election, and after some time, after 100 days from this election, we will conduct another election, and that related to all Panchayati Raj, MCD, Ward Commissioner, all those things. It means कि in a 5 year, if everything will be happen right and correct, then there will be the two election, one Lok Sabha and Vidhan Sabha, and another is the MCD or Panchayati, etc. तो वन नेशन वन इलेक्शन इज सेइंग कि आपका एक इलेक्शन होगा वो लोकसभा और विधानसभा सब मिला के. नाउ वेदर इट इज हैपनिंग इन इंडिया फर्स्ट टाइम, क्या इंडिया में ये फर्स्ट टाइम हो रहा है? तो फॉर योर इंफॉर्मेशन आई वुड लाइक टू से कि नो, इट इज नॉट हैपनिंग इन द फर्स्ट टाइम. व्हेन वी गॉट द freedom from British, then first election we conducted in 1952, and 1952, 1957, 1962 and 1967, four election was conducted, one nation one election, जहां पर लोकसभा और विधानसभा सारी लोकसभा विधानसभा was conducting as a one nation one election. तो ये हैपनिंग क्या हुआ कि 1952 से लेके 1968 तक इट वाज द वन नेशन वन कनेक्शन. नाउ इट विल से कि तो अब क्यों नहीं होता? बिकॉज वी हैव सीन इन द दिस 2024 कि यहाँ पर विद लोकसभा इलेक्शन इट वाज द इलेक्शन ऑफ द उड़ीसा, इट वाज द इलेक्शन ऑफ सम अदर स्टेट. टोटल 5 स्टेट हुआ था. जस्ट आई एम नॉट रिकॉलिंग द नेम ऑफ द एक one was the Andhra Pradesh and one was Orissa and some other state. Okay, so that was they have conducted 5 state. But abhi now we are seeing ki, there is the election in the Jammu Kashmir, and after 1 month there is the election in the Haryana. Okay, so it's happening lots of things कि हरियाणा में इलेक्शन अलग टाइम पर है, जम्मू कश्मीर में अलग टाइम पर है, आफ्टर सम टाइम इट इज द इलेक्शन इन द झारखंड. तो एवरी टाइम it is a happening. That is the reason कि government is thinking कि when we have to mode in election for the every time, so we have to go for the one nation and one election. So for your information I would like to say कि it is not happening first time in India, it's already happened at least 4 election. Now why, what happened in after 1968? In there is the some state government that was the abolish or demolish, and president rule has been adopted. तो वहां पर फिर आफ्टर 6 month और 1 year दे कंडक्टेड द इलेक्शन, तो वो 5 साल का आगे चल गया. तो इस तरीके से वो क्रम टूटा और धीरे धीरे टूटते टूटते बंटाधार हो चुका है. सो नाउ वी आर सेइंग कि अब सिर्फ 5 देयर इज द 5 स्टेट विद इलेक्शन ऑफ द लोकसभा. तो इस तरीके से ये क्रम टूट गया. तो नाउ दिस गवर्नमेंट इज थिंकिंग कि मैं सबको सिंक्रोनाइज कर दूं, एंड इट्स हैपनिंग लाइक 1952 से 1968. तो डिजोल्यूशन ऑफ द हाउस से स्टार्ट होता है. 1968 में फर्स्ट डिजोल्यूशन हुआ, प्रेसिडेंट रूल लगा था केरल में, एंड आफ्टर दैट इट इज द स्टार्टिंग ऑफ द सीरीज कि एक जगह प्रेसिडेंट रूल लगा, दूसरे जगह लगा, तीसरे जगह लगा, एंड आफ्टर दैट दे गॉट द कंडक्टेड इलेक्शन, और वो क्रम टूटा और वन नेशन वन इलेक्शन खत्म हो गया. लेकिन इसके बाद इलेक्शन कमीशन हैज गिवन द वन सजेशन टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 80s कि वी हैव टू गो फॉर द वन नेशन वन इलेक्शन. बट none of political party they have thought कि मुझे ये करना चाहिए, whether we have to discuss or not, करें या ना करें. But none of party has given the consent कि whether we have to get we have to give the debate or not, whether it is essential or not. So now it is the time of the government, Indian government, उसने इस debate को निकाल के लाया है कि no, we have to do. तो वन नेशन वन इलेक्शन में अभी नाउ इट इज द पास ओनली बाय द कैबिनेट. कैबिनेट से पास होने का इट इज नॉट सो मच इम्पोर्टेंट जब तक ये लोकसभा और राज्यसभा से पास नहीं होता है. कैबिनेट से तो कुछ भी आप पास करा लो, बट इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू गेट द कंसेंट फ्रॉम लोकसभा एज वेल एज द राज्यसभा. तो इस कमिटी में कौन कौन है? जो आवर एक्स प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद जी, ही इज द चेयरमैन.
then Dr. Nitin Chandra, that was the General Secretary, Amit Shah, Home Minister, Gulam Nabi Azad, he was the earlier he was into the Congress, now he has the own party. Arjun Ram Meghwal, he is the Law Minister. Adhir Ranjan Chaudhary, he is the Congress person, and uh, he was the leader of opposition in Lok Sabha before 2024. NK Singh, Harish Salve, he is the well-known advocate, and there is the Sanjay Kothari and Dr. Subhash C. Kashyap. So this is the formation of the वन नेशन वन इलेक्शन कमिटी, और यहाँ पर ये बिग नेम है, और इनके पीछे तो बहुत सारे लोग होंगे। और इसके बाद दे हैव कंडक्टेड द they have taken the review of the lots of the judges and lots of the person की whether it should be whether it should not be. So one nation one election का जो रिपोर्ट है 18,000 पेज 18,236 पेज का, तो वो सारे रिकमेंडेशन है, एंड दे हैव डिस्कस विद द लॉट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट, सम लॉ मिनिस्टर XYZ, तो वो सारे डिटेल वहां पर लिखा हुआ है। नाउ this committee has been formed on 2nd September 2023. It is a 1 year. It has the website onoe.gov.in and headquarter in Delhi. तो ये एक थोड़ा सा इंफॉर्मेशन था। नाउ Ramnath Kovind, chairman of this committee, has given the report to President of India. This is my recommendation, this is my report. Now it is up to you how you implement, how you pass in the Lok Sabha, Rajya Sabha. What was my liability, what was my job, I have completed. So this is the one snap that this report has been given at least 3 to 4 months back, before Lok Sabha election. That report has been given to President Draupadi Murmu ji. Now, government is saying it is a less expenditure. Government is saying when we will conduct central general election and all विधानसभा इलेक्शन, तो इट विल डू द लेस एक्सपेंडिचर, कि मुझे एक ही बार सारा सेटअप लगाना पड़ेगा और यहाँ पर मेरी कॉस्टिंग कम होगी। तो ये एक थोड़ा सा सेंसिबल बात लगती है। जैसे मेरे घर में 2 कैंडिडेट हैं, उसको मुझे शादी करवानी है, एक बेटा हो बेटी हो, या दोनों बेटा हो दोनों बेटी हो, या 2 भाई बहन हो, कुछ भी। सपोज दैट वी हैव टू कंडक्ट 2 मैरिजेस, तो वी हैव द 2 ऑप्शन जो ऑलरेडी आज की डेट पर लोग कर रहे हैं, कि we will have the marriage 2 different year. एक इस साल कर लेते, एक नेक्स्ट ईयर कर लेते। तो इस साल suppose that we have conducted one marriage in the 2023 and another marriage in 2024. What will happen? बैंकेट हॉल का अलग से कॉस्ट आएगा, सारे मेहमान को बुलाने का अलग से कॉस्ट आएगा, हलवाई का अलग से कॉस्ट आएगा, XYZ। अगर दोनों शादी को मैं क्लब करके कर लेता हूं, तो what will happen कि अगर मेरी सिस्टर है, let's I am talking about my sister, I am talking about my relative, मेरे फ्रेंड और रिलेटिव तो उतने ही लोग होंगे, तो वो 2 बार आने जाने का, लेट से जो आई हैव टू गिव द ट्रेवल एक्सपेंस, तो वो एक ही बार खर्चा होगा। लेट से जो अगर वो मेरे फ्रेंड और रिलेटिव मिला के 200 पर्सन है, तो पहले 2003 में भी 200 लोग आए थे, अब 2024 में भी 200 लोग आएंगे, लेकिन एक ही बार 200 लोग आते हैं, तो मेरी कॉस्टिंग एक ही बार ज्यादा ज्यादा 2 दिन की जगह पर मैं 3 दिन का एक्सपेंडिचर कर लूंगा। ठीक है, तो डेफिनेटली when we have clubbed something, तो expenditure कम होता है। इसमें that is the common sense. If anybody is saying no it is a ridiculous thing, then मैं कहूंगा कि बेवकूफी की बात है। when you have clubbed 2 activity, तो expenditure कम होना है। now there is the some person is saying कि इस expenditure is nothing for the government of India, like GDP का 1% भी नहीं है, तो that's the another part कि ये कितना है, even whether we are saving 1 rupees or not. Some person is saying, whatever we are saving, so we have given the corporate, we have given the poor person, we have given the subsidy. That's another part. But whether we are saving some expenditure or not, definitely we are going to save some expenditure. More development time. We have seen if when there is some election, then it is the election commission is conducting some moral code of conduct, जहां पर 2 महीने पहले या 1 month पहले there is no such as the announcement कि हम ये नया स्कीम ला रहे हैं, X ला रहे हैं, Y ला रहे हैं। और when you have visited any government officer, तो government officer will say कि सर अभी इलेक्शन ड्यूटी पर गए हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं there is the some
obstacle in development work or some government work. So that is the recommendation of the committee. गवर्नमेंट इम्प्लाई इन्वॉल्वमेंट, तो यहाँ पर कहा था कि एवरी टाइम व्हेन देयर इज द वन लोकसभा इलेक्शन, वहां पर गवर्नमेंट इम्प्लाई का ये होता है, फिर फिर विधानसभा आता, फिर वहां पर इन्वॉल्वमेंट आता, फिर एमसीडी का आता, तो एवरी टाइम गवर्नमेंट इम्प्लाई इज द इन्वॉल्व। तो ये तीन चीजें हैं जहां पर ओ एन ओ ई कमिटी हैज रिकमेंडेड कि हमें वन नेशन वन इलेक्शन करना चाहिए। फिर ये पार्टी सेइंग, और इट इज द माय पर्सनल सजेशन, कि ये सारे पार्टी के लिए भी एक्सपेंडिचर कम होगा। एक तो एक्सपेंडिचर हमने बात किया था कि इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन कम होगा। नाउ इट इज द ऑल पार्टी एक्सपेंडिचर कम। सपोज दैट आई एम द पार्टी एक्स और मेरे लोकसभा में भी कैंडिडेट है और विधानसभा में भी है, तो व्हाट विल हैपन कि मैं एक ही बार पर्चा बनाऊंगा और उसी पर्चे में मैं सबका नाम डाल के पब्लिक तक कर सकता हूँ कि एट द पार्टी लेवल इफ आई एम थिंकिंग, तो मेरी भी एक्सपेंडिचर कम होगी। देन मोर फोकस इलेक्शन, यहाँ पर वी हैव टू डिस्कस कि when we will visit to any public, तो we can provide the information कि सर ये नेशनल लेवल पर ये हो रहा और लोकल लेवल पर ये हो रहा। अदरवाइज फाइट हैपनिंग कि लोकसभा में हम नेशनल लेवल की बात करते हैं, विधानसभा में हम लोकल लेवल की बात करते हैं, तो वहां पर इट विल बी द मोर फोकस इलेक्शन कि आपको क्या चुनना है, कैसे चुनना है, ये सारी चीजें। नाउ अब जो सबसे बड़ा चीज, व्हाट इज द कॉन्स, व्हाट इज द डिमेरिट, तो सबसे पहला चीज है it is the going to create some unemployment. Now you will think कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सेइंग कि बहुत अच्छा है, कॉस्टिंग कम होगा, जो भी चीजें हैं, तो पहला चीज जहां पर एनीबॉडी सेइंग कि कॉस्टिंग कम होगा, तो इट इज द इंडिकेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। लाइक जैसे मैंने आई हैव गिवन द एग्जांपल ऑफ द मैरिज, कि मैंने एक भाई की शादी 2023 में कर रहा हूँ, सेकंड भाई की शादी 2024 में कर रहा हूँ, तो वही हलवाई को मैं दो बार काम दे रहा हूँ, एक बार 2023 में भी काम दे रहा हूँ, एक बार 2024 में दे रहा हूँ। प्रिंटिंग वाला कार्ड का मैं एक बार 2023 में भी प्रिंट करवाऊंगा, एक बार 2024 में भी प्रिंट करवाऊंगा। मैं जो कपड़ा लता मैंने 2023 में पहना था, आई विल नॉट वियर द सेम क्लॉथ इन द 2024, मैं अगेन नया कपड़ा पहनूंगा। लेकिन अगर दोनों शादी को मैं क्लब कर लूं, हलवाई को एक बार पैसा दूंगा, प्रिंटिंग एक बार होगा, कपड़े भी ऑलमोस्ट, अगर 2 दिन का फंक्शन है तो मैं 2 ही कपड़ा पहनूंगा, अदरवाइज मुझे 4। तो कहीं ना कहीं व्हेन यू आर सेइंग कि वी विल रिड्यूस एक्सपेंडिचर, तो अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा ही होगा। सेकेंड थिंग, लेट्स अज्यूम आई एम द डिजिटल मार्केटर और I am working for political party. So now it is the Lok Sabha election. So I am working for the X party. I am working for the Y party. Okay, ji. After 3 to 4 months, again it is the election in other. Now it is the election in Jammu Kashmir. So again I connected with some political party, some political leader की sir I will do some digital marketing for you. तो बोलेगा okay जी आ जाओ। फिर मैंने जम्मू कश्मीर में किया, and after 3 to 4 months, it is the election in the Maharashtra, it is the election in Jharkhand, it is the election in Bihar, it is the election in UP. So every time, as with the digital marketing, or I have the printing press, जहां पर मैं some document print करता हूँ, flag print करता हूँ, तो every time I will get the employment. लेकिन once it is the one nation, one election, so definitely my service will be not required by the political party, so it is going to create the unemployment. उसके बाद मीडिया हाउस डिस्कशन, एवरी टाइम व्हेन वी ओपन द टेलीविजन चैनल, तो वहां पर जो एंकर है, पॉलिटिकल पार्टी है, दे आर डिस्कसिंग कि भाई ये मुख्यमंत्री बनेगा, वो प्रधानमंत्री बनेगा। एवरी टाइम वी आर सेइंग द सच काइंड ऑफ द कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये आज का क्या होगा, तो ये एवरी टाइम एवरी 2 and 3 मंथ पर होता है कि अब नाउ इट इज द इलेक्शन इन द जम्मू कश्मीर, तो अभी जम्मू कश्मीर सर, आफ्टर इलेक्शन ऑफ द जम्मू कश्मीर ये हरियाणा का चलेगा, फिर बिहार का चलेगा, ठीक है। तो मीडिया हाउस में भी कहीं ना कहीं जब इलेक्शन नहीं होगा, बिकॉज वी आर सीइंग द टेलीविजन नॉट फॉर ओनली फॉर द न्यूज, वी आर सीइंग द कि अब क्या होने वाला है, कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है, कौन क्या होने वाला है, तो मीडिया हाउस में भी कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट का खतरा आएगा, डिस्कशन पर खतरा आएगा। और सबसे बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा इंडियन पब्लिक में। जैसे आप और हम नाउ वी आर डिस्कसिंग कि भाई वन नेशन वन इलेक्शन क्या होगा, या जब आप किसी दोस्त से मिलते हो ऑफिस में, व्हेन यू आर डिस्कसिंग इन द फ्री टाइम, यार मोदी ने ये बोल दिया, राहुल गांधी ने ये बोल दिया, ये पार्टी ने ये बोल दिया, ये पार्टी, तो जब वो
एक बार इलेक्शन होने के बाद 4 साढ़े 4 साल तक कोई इलेक्शन ही नहीं है, तो इंडियन पब्लिक जो हमारा टाइम पास होता था, ये भी टाइम पास नहीं होगा। चाय के दुकान पर जो लोग जाके पॉलिटिकल डिस्कशन करते थे, अब तो ये प्रधानमंत्री बनेगा, ये तो वो डिस्कशन भी, तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तरीके से क्रिएट होना है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सोचना पड़ेगा। नाउ what is the challenges? Some party, some person is saying कि हमें we have to create lots of the EVM। तो अगेन अगर हमें लॉट्स ऑफ द ईवीएम क्रिएट करना है तो कर सकते हैं। रीजन इज दैट कि आज से 10 साल पहले वी आर नॉट क्रिएटिंग, वी आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग आर्म्स। जब हम आर्म्स नहीं क्रिएट कर रहे थे, वी आर परचेजिंग फ्रॉम अदर कंट्री, तो क्या हम ईवीएम क्रिएट नहीं कर सकते? और आज तक इंडिया में जितना भी ईवीएम है वो इंडिया में ही क्रिएट हुआ है। तो अगेन वी कैन, जैसे जो अभी 5 लाख ईवीएम है तो हम उसको 15 लाख भी कर सकते हैं। जब हमारा सैटेलाइट चांद पर जा सकता है तो इट इज नॉट है। और अगेन जब कॉस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। तो और इट विल बी द ब्रेक इवन, कि 1 या 2 इलेक्शन के बाद इट विल बी द ब्रेक इवन। हाउ टू इम्प्लीमेंट फर्स्ट टाइम, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कि फर्स्ट जो मैंने आपको जो सवाल किया था फ्रीक्वेंट टास्क क्वेश्चन में, कि जो वट एवर द इलेक्शन इज हैपनिंग इन 2027, ये 29 तक ही चलेगा या 32 तक चलेगा? इफ इट इज हैपनिंग इन द 29, देन इट इज द death of democracy। और after 29, if any state didn't get any majority, or after getting the majority after 1 year 2 year, that government has been demolished, what will happen? So how to implement first time, that is the most important thing। अगर ये 5 साल के बीच में अगर कोई सरकार गिर जाती है, तब आप इसको क्या करोगे? क्या आप फिर से यू विल, लेट्स से 29 में ऑल स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द वन इलेक्शन, एंड 31 में एक स्टेट का कोई सरकार गिर जाती है, तो वो 31 से लेके 34 3 साल के लिए आप बनाओगे। इफ यू आर सेइंग कि या आई विल, और मैं कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करूंगा, तो फिर अगेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन पब्लिक का तो पैसा खर्च हो गया ना। तो देयर आर लॉट्स ऑफ इफ एंड बट, कि ये क्या होगा, कैसे मैनेजमेंट, हाउ यू विल द मैनेज। नाउ रीजन इज दैट कि एज यू आर सेइंग कि मैं पहले विधानसभा लोकसभा करूंगा, तो यू नीड द सम फोर्सेस, उसके बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉय। और यू नो कि आप पिछले 8-10 सालों में गवर्नमेंट एम्प्लॉय का ज्यादा ये नहीं हुआ है, दे हैव नॉट गिवन द जॉब। वहां पर भी कटनी हो रहा है, बीआरएस हो रहा है, तो हाउ यू विल मैनेज, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अभी क्या है, लेट्स अज्यूम कि इन इलेक्शन कमीशन इट इज द 100 स्टाफ। तो अभी एक स्टेट में हो रहा तो वहां पर 100 को लगा दिया, फिर दूसरे स्टेट में हो रहा वहां पर लगा दिया, तो दे कैन, दे आर मैनेजिंग ऑन द रोटेशन बेसिस। लेकिन अगर एक बार होना है तो हाउ यू विल मैनेज, तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि हाउ एनी गवर्नमेंट विल मैनेज होल इलेक्शन। Now, if you have any question, you can ask, or I would like to request